हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टोमेटो बुक होता है आईएसआई के लिए द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल and it is composed by the Indian Statistical Institute and its uh, uh, publisher is the East West Press जो कि आईएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका आईएसआई का प्रिपरेशन के लिए एक ग्रेट रोल ऑफ दिस बुक आल्सो फ्रॉम ईयर टू ईयर। 689 से 694 का जो क्वेश्चंस है तो ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं आज के वीडियो में। ओके, सो दीज आर द वेरी classical questions in nature. The first question: if be a functions of a real variable such that it is satisfies f of r plus s equal to f of r plus f of s for all r and s, and the let m and n are the integers, then f of m by n equals to ABC options are there. Okay, so सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो द लाइक एंड ऑल्सो कमेंट्स दो। और कुछ बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स भी आया था लास्ट बार। ओके, सो चलो हम लोग पहले 689 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ट्राई करते हैं। सो 689 का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट ये जो एफ ऑफ आर प्लस एस इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ एस, इसको पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस। ये कौन सा फंक्शंस है? इट इज वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस है जिसका नाम है काउचीज फंक्शनल इक्वेशन। Equation. Okay. Then supposed to be, if we put r equal to s equal to 1, then f of 1 plus 1 should be f of 1 plus 1 equal to f of 1 equal to f of 1 plus f of 1. Okay, we have to plug this point. It is f of 2, so equal to 2 f of 1. Okay, by induction process, how we can generate the n inside these functions. Okay, so that means f of n can be written as f of 1 plus 1 plus 1 up to n times, right? So it can be written as f of 1 plus f of 1 plus up to f of 1, right? So that means अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इवैल्यूएट करेंगे। हाउ टू इवैल्यूएट दिस? 1 f of 1 by n. ओके, सो इसमें हम लोगों को सो दैट मीन्स f ऑफ जो रीअरेंज टर्म करेंगे f ऑफ 1 by n इक्वल टू 1 by n because n times of f of n 1 in this sequence. Okay, so this is 1 by n into f of 1. It can be written as. Now we can plug the value m by n, any rational number. Okay, any rational number. Any rational number. So it is f of m by n
can be written as f of times of 1 by n plus 1 by n, and this part should be m times. M times, it is not n times, this is m times. That means it is f of 1 by n plus f of 1 by n plus up to plus f of 1 by n, and this repetition should be m times. ओके, इसको हम लोग फिर, तो दैट सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, देन f ऑफ m by n कितना होगा, ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ 1 by n times of f of 1. So we can write this as the m by n into f of 1. So इसका जो आंसर है, तो आंसर हम लोग देख सकते हैं, दैट शुड बी, इसका जो आंसर है 681, सो आंसर शुड बी सी. ओके, सो इसमें बहुत सारा क्लासिकल क्वेश्चंस और बेसिक लेवल का क्वेश्चंस आता रहता है आईएसआई का एग्जाम, तो हम लोग उसको देख के सेट करना चाहिए. तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 690 and its solution. Now we have to go for the study the questions first. If let f of x be a real valued function, define all real number x such that f of x minus f of y modulus is less than equal to half of x minus y modulus for all xy. Then the number of points of intersection of the graph of y equal to f of x and the line y equal to x is 0 point of intersection, 1, 2 or none of the foregoing numbers. Okay. So हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रैक करते हैं. तो कंडीशन इज गिवन दैट, मोस्ट ऑफ द कंडीशन हम लोग मैथ में और फिजिक्स में उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं. ओके, सो ये जो कंडीशन है, कंडीशन दिया है कि हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई मॉडुलस एंड ऑल्सो the intersection of the graphs. Okay, intersection of the graphs y equal to fx and the y equal to x occurs a point, that means it is f of x equal to x, and this point is known as, this point is known as fixed point of the fixed point of the function. Okay, as there are the existence of a point, so at least one intersection point should be exist there if the fixed point is there. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, इसमें g of x इक्वल टू f of x minus x, f of x minus x. So f of x minus f of 0 मॉडुलस, ये वैल्यू को लेके वहां पर हम लोग पुट करेंगे. So that should be less than equal to 1 by 2 half of the modulus of the x. That means f of x is less than equal to f of 0 plus half of x. That means my gx is f of x minus x is less than equal to f of 0 minus 1 by 2 times x. आज
x tends to infinity, so also gx tends to negative infinity. Okay. So intermediate value theorem, according to this intermediate value theorem, so g of x, so g of x equal to can be 0. So we have to supposed to be there are two distinct points. We have to check this. There are two distinct points f of x1 equal to x1 and f of x2 equal to x2. Let us check this. F of x1 minus f of x2 modulus should be less than equal to half of x1 minus x2 modulus. Substituting this value, f of x1 equal to x1 and f of x2 equal to x2. So x1 minus x2 modulus should be less than equal to half of x1 minus x2 modulus. This inequality holds good only when x1 minus x2 becomes 0. That means x1 equal to x2. So there cannot be 2 points of intersection here. We can prove from this uh, intermediate value theorem that there are no, therefore, there cannot be, there cannot be two distinct points. Okay. So that means only exactly one point of intersection is there. So hence there will be one one point of intersection. Point of intersection. Okay. So question answer must be 690. So answer क्या होगा? B होगा. Then for the limit 1 by n square sum of k equal to 1 to n, it is k whole into k plus 1, k plus 2 whole into k plus 4 as n tends to infinity. And option A exist exist and equal to 1 by 4, exist and equal to 1 by 8, exist and equal to 0, does not exist. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ पर एक समेशन का सीरीज दिया है जो कि हम लोगों के प्लस के होल इंटू के प्लस 2 होल इंटू के प्लस 4 एंड के का वैल्यू 1 से लेके हम लोग उसको एन तक उसको ये करेंगे. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 691 solution part, first of all we have to simplify this term. Suppose kth term is given. So it is k whole into k plus 2, k plus 2 whole into k plus 4. हम लोगों को जब उसका एक्सपांडिंग इसको हम लोग देखेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसे आता है हम लोग को जरूरी है. बट इन केस ऑफ सीक्वेंस सीरीज इट इज रिक्वायर्ड, बट आज इट इज द लिमिट. हम लोग को ये सीक्वेंस को हम लोग को सॉम करना है.
सो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, तो ये मेरा आ जाएगा के क्यूब प्लस 6 k स्क्वायर, 2 k स्क्वायर एंड 4 k स्क्वायर, इट इज 6 k स्क्वायर प्लस 8 k. ओके, 4 to the constant term, it is 8 k. So now we have to calculate. Suppose my Sn should be sum k equal to 1 से लेके हम लोग n तक इसको ऐड करेंगे. सो क्या होगा, k क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 8 k. सो अभी अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली सम करते हैं, सम ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n तक k क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ सम ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर एंड प्लस 8 इंटू सम ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n तक k. सो k क्यूब का होता है मेरा n तक होने से n होल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स. और 6 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर should be n whole into n plus 1 whole into 2n plus 1 by 6. यहाँ पर कैंसल आउट हो गया. प्लस 8 टाइम्स इंटू सम ऑफ द नेचुरल नंबर, इट इज n whole into n plus 1 by 2. ओके, सो ये सारे टर्म्स हम लोगों को आने के बाद हम लोग ये सारे टर्म को ऐड कर देंगे. ओके, अगर ऐड कर लेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो हम लोग पहले n होल इंटू n प्लस 1 अगर कॉमन ले जाते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा n होल इंटू n प्लस 1 बाय 4 प्लस n होल इंटू n प्लस 1 चला गया तो 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस इट इज 4 टाइम्स, इट इज 4. ओके, सो हाईएस्ट जो पावर है तो हम लोग का इधर हो जाएगा n स्क्वायर एंड ये n स्क्वायर हो गया n टू द पावर 4 हो जाएगा. और इससे पहले क्वेश्चंस में एक है और शायद n मल्टीप्लाई में था, यस 1 बाय n टू द पावर 4 था, 1 बाय n टू द पावर 4. तो बेटर होगा तो हम लोग इसमें हाईएस्ट पावर को एक्सेस कर लेते हैं. हाईएस्ट पावर एक्सेस करने से कितना होगा, दिस इज n स्क्वायर होल इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा n होल इंटू n प्लस 1 होल इंटू 2n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को पावर 1 बाई nth पावर n रेज टू द पावर 4 दिखाई दे रहा है. तो n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n टू द पावर 4 और ये जो पार्ट है एस एन. तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो 1 बाय n टू द पावर 4 होल इनटू हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म को, तो इसमें क्या होगा कि n टू द पावर 4 और इसको हम लोग n प्लस 1 का होल स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 कर देंगे, तो इसमें आएगा n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n टू द पावर n स्क्वायर. ओके, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 plus these terms are calculated. Okay, there is no problem. Now highest power should be divided to n to the power 4. So limit n tends to infinity, जब हम लोग हाईएस्ट पावर n टू द पावर 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1/4 प्लस सम टर्म्स which is in the form of 1/4n plus so on and n in the denominator side. आज n टेंस टू इंफिनिटी एंट्रेंस क्वेश्चन में इसका स्ट्रैटेजी वही होता है, जब n टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, 1 बाई n टेंस टू 0,
1 by infinity should be, matlab means it is tends to 0. Okay. So 1 by n square also tends to 0. Okay. So all these terms are becomes 0. Need not necessary to access and multiply to waste your time at the examination hall. So हम लोग का फर्स्ट टर्म जो है वो आंसर है. ओके. सो ये जो आंसर है हम लोग का आ गया मोस्टली ऑप्शन ए, exist and equal to 1 by 4. Exist and it is 1 by 4. नेक्स्ट हम लोग का द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस रूट टू का अंडर रूट ओवर ऑफ टू अंडर रूट ओवर ऑफ टू इंटू अंडर रूट ओवर ऑफ टू एंड सीक्वेंस इज कंटिन्यूस. दिस इज द सीक्वेंस एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज infinity 1 2 and 2 root 2. Okay, let us access this. This is the part of the sequential series. First of all, identify. Always I am telling that this question is the 692. 692. Its solution is, first of all, we have to identify the recurrence relation first. It's A1. First term is root 2. Second term A2 equal to under root of 2 root 2 again. Means it is 2A1 under root. Similarly, my A3 should be under root of 2 into under root of 2 into root 2. Just like this. That means it is 2A2 under root of. In general, when we have to go for the nth term, this is a n plus 1th term should be like this, equal to 2a under root of this term. So this is my nth relation. Okay, general form of the this sequence. Okay, assuming that the limit existing here. Okay, so now limit should be L. So that means 2L under root over. So L square equal to 2L. So L square minus, let my limit equal to L. So L square minus 2L equal to 0. So L whole into L minus 2 equal to 0. So L equal to 0 or 2. Here is another problem arises. So 0 is there and options may no options contains 0. It is 1, 2 and 2 root 2 just like this. Okay. So now which answer? If the 0 is there, if in these options, here A option is, this is a very tricky questions, that A option is 1 and B option is 2, C option is 2 root 2 and D option is infinity. हम लोग का आंसर आ रहा है बी. ओके, इट्स वेल एंड गुड. अगर 0 आ जाता है, अगर 0 ऑप्शंस में होता तो क्या होता? ओके, क्या होता कि जो सीक्वेंस अगर रूट 2 में स्टार्ट हो रहा है, हम लोग क्या देखे, जो सीक्वेंस है वो मेरा रूट 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग इन नेचर, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है. ठीक है, वेरी स्लोली इट विल इंक्रीज, बट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. So limiting value should be root 2. Okay. So limiting value, so approximately its value is 1.414 and therefore the limit must be 2. तो ये आंसर हम लोग का 2 आएगा.
600, देन हम लोग 693 में जा रहे हैं। 693, 693 में जो क्वेश्चंस दिया है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। Let Pn be the 2 cube minus 1 by 2 cube plus 1, 3 cube minus 1 by 3 cube plus 1, 3 n cube minus 1 by n cube plus 1, and n equal to 2, 3. So the string starts from the 2. Okay, then limit n tends to infinity. Pn is 3 by 4, 7 by 11, 2 by 3, and 1 by 2. This is a good question also. I think that's so. So now, so everything is given in these questions. Okay, very good questions है। इसमें हम लोगों को जो पीएन दिया है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिकॉग्नाइजिंग का बात है कि आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर जो पीएन ऑलरेडी गिवन है, 2 cube minus 1 by 2 cube plus 1, ओके, इंटू 3 cube minus 1 by 3 cube plus 1, 3 cube plus 1, प्लस अप टू इट इज n cube minus 1 by n cube plus 1, और n का वैल्यू मेरा कहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होके जा रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोगों को ये जो सपोज टू बी कहीं ना कहीं एक के टर्म्स होता है, हम लोग जैसे सीक्वेंस सीरीज इंडक्शन प्रोसेस में फॉलो करते हैं, तो केथ टर्म हो तो मेरे को क्या करना है, तो इसको फैक्टराइज करना है। सिंपल मेरे को वही दिख रहा है, k3 - 1 होता है k-1 होल इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, तो अंदर सारा प्लस होगा, सो k3 + 1 हो जाएगा k+1 होल इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो ये दो टर्म हो गया। तो हम लोग जब k3 - 1 nth टर्म kth टर्म को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो k3 + 1 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा मोस्टली k-1 होल इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय k+1 टाइम्स इट इज के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ओके, सो जो सेकेंड फ्रैक्शन है, देखो सपोज टू बी माई जी ऑफ के एक फंक्शंस में यूज कर रहा हूं, दिस इज के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ओके, so gk+1, suppose to say k+1 at the term, and by the induction process we can find it is k+1 whole square minus k+1 plus 1. Okay, so it is k square plus 2k plus 1 minus k minus 1 plus 1. Also again it should be k square plus k plus 1. Again we have to start here. Okay, this is the most identifying relations. So that means the term should be term, हम लोग उसको क्या करेंगे, जो टर्म है k-1 by k+1 into g time g of k+1 divided by gk. Okay, जो फंक्शंस हम लोग यहाँ से let g of k equal to this, let us say that. सो यहाँ पर जो हम लोगों का जो Pn है, तो Pn को हम लोग अभी क्या करेंगे, सो Pn आज ए प्रोडक्ट, Pn आज ए प्रोडक्ट ऑफ k = 2 से लेके n तक k-1 by k+1 into also product of n k = 2 से लेके, so g of k+1 over g of k. Okay, now we have to plug the values of k = 2. This is 2 minus 1, it is 1, 2 plus 1, 3. So it is 1 by 3 into 2 by 4 into 3 by 5 up to n minus 2 over n.
into n minus 1 over n plus 1. So this is the first string product that we have to write as the 1 into 2 over n whole into n plus 1. Okay. Now the second part of this product. Okay. Second part of this product equal to, we have to doing here that the g of 2 means it is g of 3 divided by g of 2. Okay. And g of 4 divided by g of 5. 4 means it is less than, it is 3, into so on to go up to n plus 1 over g of n. So overall product is, it is g n plus 1. First and last, we are taking the telescoping also. Okay, product and multiplication cases, we can take the telescoping. This is g of 2. Now my Pn. So what is the g of 2? So g of 2 equal to 2 square minus 2 plus 1. So it is should be 4 minus 2, it is 2 plus 1, 3. So g of 2 is this. And g of n plus 1 value, g of n plus 1 value should be n plus 1 whole square minus n plus 1 plus 1. As before also we have seen this, this is the n square plus n plus 1. These are the very most important in the complex number, x square plus 1, x square minus x plus 1. Okay. So मेरा जो pn है, तो हम लोग pn निकालेंगे तब तो जाके इन्फिनिटी जो लिमिट निकालेंगे ना. सो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है pn का वैल्यू. सो 2 बाय n होल इंटू n प्लस 1 into n square plus n plus 1 divided by also 3. तो मेरा आ जाएगा 2/3 of n square plus n plus 1 divided by n square plus n. Okay. So final limit, we have to divide the highest power as we have to plug the limit. So limit n tends to infinity. So Pn equal to limit n tends to infinity and 2/3 times of 2/3 and हम लोग लिमिट किस में डालेंगे, n स्क्वायर डालेंगे तो 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर divided by 1 plus 1/n. This term is 0, this term is 0 and this term also 0. So it is 2/3. So आंसर इज 2/3. सो हम लोगों का आंसर जो है 2/3 मीन्स इट इज सी. ओके, वी हैव टू गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन. इट इज सी. वेरी गुड. And let a1 is 1, an is n times of n minus 1 plus 1, n equal to 2, for n equal to 2, 3 up to p5. Pn equal to this, then limit n tends to infinity of the Pn is, it is 1 plus e and 1 and infinity. Okay, let us access this question. So 694 number questions. These are very good questions I have selected for this year. And also it is very important for ever. Okay, so जिसको प्रिपरेशन करना है इस टाइप का क्वेश्चन वो करना चाहिए. तो इस बुक को कंप्लीट करना जरूरी है. ओके. सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स. सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना है. सो लेट a1 equal to 1 and an equal to n times of an minus 1 times plus 1. फॉर n कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है, 2, 3 अप टू d5. मतलब इसमें फाइनाइट टर्म में डिफाइन हो पा रहा है. देन फाइंड द लिमिट. क्वेश्चन इज लाइक दैट, फाइंड द लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी पी एन। ओके। सो अगर हम लोग ए एन से शुरू करना चाहते हैं तो एन क्या दिखाएगा, ए एन मल्टीप्लाई कर देंगे, एन टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन प्लस एन होगा। ओके। तो अभी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हम लोग इसमें अगर एन फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं, ए एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इक्वल टू ए एन माइनस वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। अरे एन बाय, इसको तो समझना पड़ेगा। ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सम। ओके। सम मीन्स it is a n, it is a n divided by n factorial, okay, right, equal to a 1, a 1 by 1 factorial when put the value of a 2, n equal to 2, then plus sum of 1 by k factorial where k equal to 1 से लेके n equal n तक, n minus 1 तक, okay, n minus 1 because 2 is there। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 by 2 फैक्टोरियल, अप टू कितना तक लिख सकते हैं 1/n-1 फैक्टोरियल, और इक्वल टू इसका सम आ जाएगा। इसका सम कितना होगा, सो के इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक 1/k फैक्टोरियल। ओके। So now we have to write the product terms. Okay. So 1 + 1 by AK equal to AK plus 1 divided by AK. From the recurrence relation, AK plus 1 equal to K plus 1 times AK plus 1. So AK plus 1 equal to AK plus 1 divided by K plus 1. That means 1 + 1 by AK equal to AK plus 1. Yes, AK plus 1 divided by K plus 1 times, इसको हम लोग AK इधर रखेंगे। Okay. So this is AK. Now telescope the product of a PN. Okay, telescoping करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को लेके। So my PN equal to product of this N and K equal to 1. Okay. My battery is dead. It is interrupted my work. So AK plus 1 terms divided by K plus 1 times AK. So 1 by n plus 1 factorial, it is the product of the K equal to 1 से लेके
n तक a k plus 1 by a k. ओके, सो सिंस a1, हम लोग का a1 इक्वल टू 1 दिया है, सो pn should be a um, n plus 1, a n plus 1, because all are the n, so you have to put here n. Okay, so it is a n, and it is also a n divided by a. So a n by n plus 1 factorial. Okay, so to find the limit, we have to, the limit n tends to infinity, pn equal to sum of limit n, limit n tends to infinity. It is sum of value k equal to 0 say n 1 by k factorial. It is equal to e. So this answer should be B. Okay. Okay, students. Those who are watching these questions or these videos, please subscribe my channel and also like and comments. And thank you. Wish you all the best for the ISA 2026 and JMN and also JER.